One thing I have heard frequently from many GMAT aspirants is the idea of trap options. कि सर मैं बस सही मार्क करने वाला था but I went for the trap option. And sometimes after getting the question wrong they'll say, oh I have been trapped. तो मैं उन क्वेश्चंस को देखता था और मैं सोचता था यार ये क्या ट्रैप है इसमें. So now for me there are no trap options, there are just options. Uh, किसी में कोई डिफरेंट लॉजिक लग रहा है, किसी में कुछ और डिफरेंट लग रहा है, किसी में कुछ वर्ड्स किस तरह के हैं, किसी में वर्ड्स कुछ किस तरह के हैं, किसी में लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है, किसी में लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, किसी में थोड़ा सा डेंस सेंटेंस है, किसी में सिंपल सेंटेंस है. ये सब तो मुझे नज़र आता है. ट्रैप ऑप्शंस क्या होते हैं? तो देन आई शेयर कि फॉर एन एक्सपर्ट देयर आर नो ट्रैप ऑप्शंस. फॉर एन एक्सपर्ट इट इज़ वेरी क्लियर कि ये 4 गलत ऑप्शंस हैं और एक सही ऑप्शन है. तो फिर ट्रैप ऑप्शंस नहीं होते? नहीं होते. वो तुम्हें ट्रैप लग रहे हैं बिकॉज़ दैट इज़ योर एक्सपीरियंस विद देम. और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? बेसिकली कि तुम्हें वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं, पर हैं वो गलत. दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग देम ट्रैप, राइट? दैट्स द रीज़न. अगर करेक्ट ऑप्शन अट्रैक्टिव लगता है तो उसको तो ट्रैप नहीं बोलते हो. बट वो इनकरेक्ट हैं, बट तुम्हें करेक्ट लग रहे हैं. दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग द ऑप्शन ट्रैप. तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली यू कैन लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर कि तुम्हें अट्रैक्टिव लग ही क्यों रहे हैं जबकि वो इनकरेक्ट हैं. तो कहीं ना कहीं यू आर फॉल्टरिंग. You could be faltering at the level of comprehension, reasoning, at the level of concept application. Somewhere you are faltering. So the option is not a trap. We can say that trap is your lack of skills. Or we can say that it seems a trap to you because you are not skilled enough to handle it. But as long as you keep saying कि यार ये options trap है, तो basically you are saying this is a characteristic of the option कि वो एक trap है. सो देन तो फिर तुम्हारा पूरा गेम ये चल रहा होगा कि ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करना है. तो पता नहीं तुम क्या-क्या सोचते होगे ट्रैप्स को अवॉइड करने के तरीके. बट इफ यू सिंपली अंडरस्टैंड कि ये ट्रैप इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग या कांसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, तो यू नो किस पे काम करना है. तो यू ट्राई टू फिगर आउट कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम थी, रीजनिंग में थी, कांसेप्ट क्लैरिटी में थी, तो उन पे काम करोगे. धीरे-धीरे द ऑप्शंस विल स्टॉप सीमिंग ट्रैप्स टू यू. I think the same thing is very much applicable to life. कि हम कई situations में होते हैं, we are saying it's a terrible situation, we are saying this is a terrible person, this is a horrendous company to deal with and all that. तो we are saying basically तो बात तो ये है कि हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत खराब है, राइट? तो अब एक्सपीरियंस क्यों खराब है? तो नेचुरली वी आर एक्सटर्नलाइजिंग कि यार वो ऐसे ही है, सिचुएशन ऐसी है या फिर इंसान ऐसा है. दैट्स व्हाई द एक्सपीरियंस इज बैड. सो वी आर कॉलिंग इट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन और द सिचुएशन कि क्योंकि वो पर्सन या सिचुएशन ऐसी है, दैट्स व्हाई आवर एक्सपीरियंस इज लाइक दैट. बट क्या हर किसी का एक्सपीरियंस सेम रहेगा सेम सिचुएशन में? एंड अगेन वी हैव अ टेंडेंसी टू थिंक यस ऑफ कोर्स है ही ऐसी सिचुएशन या ऐसा पर्सन. Again, there is a reason, of course. Uh, we keep denying the possibility that someone else may have a very different experience in the same situation or with the same person. And that is also perhaps the same reason why we call options traps, or basically the basic tendency to externalize the problem. तो प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज क्यों करते हैं कि ये ऑप्शन ट्रैप है, कि ये इंसान ट्रैप है, हॉरिबल है या ऑफल है, या फिर ये सिचुएशन इतनी हॉरेंडस है. तो व्हाई डू वी हैव दैट टेंडेंसी टू एक्सटर्नलाइज कि प्रॉब्लम इज आउटसाइड ऑफ मी? बिकॉज एज सुन एज वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
The problem could be inside of me कि मेरे में skills नहीं है, either to handle the option or to handle a person or a situation. Then there is a huge tendency within us to get into self blame or self criticism, which is another layer of problem. As soon as we discover a problem within us, we get into self blame and self criticism. Now, the solution actually lies in working on self blame or self criticism कि ये हो क्यों रहा है. Why get into all this? प्रॉब्लम अगर आई है उसको सॉल्व करते हैं. But why get into self blame and self criticism? But we don't get into this aspect. We don't try to handle the self blame or self criticism. Instead, वो constant रहता है self blame या self criticism. But as soon as that remains constant, the tendency changes to avoiding taking responsibility. Then you say कि मेरे में कोई problem है ही नहीं. क्योंकि as soon as I say कि मेरे में प्रॉब्लम है तो देर इज अ लॉट ऑफ पेन. एक तो सिचुएशन ऑलरेडी टफ है, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम मेरे में है या बाहर है. तो सिचुएशन टफ है. दूसरा, एज सुन एज आई से कि आई डोंट हैव द स्किल्स टू हैंडल दिस, सो देन वी गेट इनटू सेल्फ ब्लेम और सेल्फ क्रिटिसिज्म, व्हिच इज another layer of pain. So right, so it's a compounding of pain that happens. To avoid this compounding of pain, we just deflect the responsibility outside. But as soon as, or as long as we keep externalizing the responsibility, we're also denying the power to change our experience. अगर मैं बोलूं कि ऑप्शंस ही ट्रैप हैं, तो फिर तो मैं किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ कि यार ये जी मैट वाले क्यों ही बनाते हैं ट्रैप ऑप्शंस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी प्रॉब्लम है. बट अ लॉट ऑफ पीपल सबकॉन्शियसली रियलाइज कि उससे क्या हो जाएगा. सो बट देन इवन इफ दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन कि मैं ट्रैप्स में फंस रहा हूँ तो क्या सोल्यूशन होगा, तो देन जस्ट इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द कोर इशू ऑफ क्लैरिटी, दे गेट इनटू कि स्टार्ट टू लुक फॉर पैटर्न्स कि ट्रैप ऑप्शंस के क्या पैटर्न्स हैं, which doesn't solve the problem. Similarly in life, if we keep calling कि ये situation में problem है, इस person में problem है, so then what? Then essentially those people shouldn't exist. Those situations shouldn't exist. Then I keep saying this. But will that solve the problem? No. बार बार यही बोलने से कि you shouldn't behave like this, you shouldn't do that like this, these people shouldn't do that, or why do such situations even exist in the first place? इससे प्रॉब्लम्स थोड़ा ना सॉल्व हो रही हैं. वी आर जस्ट वेंटिंग आउट फ्रस्ट्रेशन, राइट. तो पहले तो फ्रस्ट्रेशन आई because we didn't know how to handle the situation. Frustration essentially is a form of suffering, right? तो अब वो suffering क्यों हो रही है? Why do we find the situation awful or horrendous? I'm saying कि एक possibility है, which is a possibility that I'm talking about, that we don't have the skills. And when I talk in terms of skills in real life, in terms of handling people and situation, I'm calling it essentially the character of a person. Your who you are from the inside. अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि as soon as we say कि okay, so the reason I am suffering or I am finding these situations or people horrible or my experience is really bad, the reason is that I'm deficient from within. Now, as soon as we say that, we feel really, really bad from within. We suffer even more acutely. Why? Because वो बड़ा ही subconsciously है कि that if I am responsible, then I am so terrible. Anybody who is responsible has to be blamed. If I am responsible, I'm the one to be blamed. So एक तो situation की suffering है, and then on top of that there is a suffering of self blame, which is extremely painful.
So since this is extremely painful, we definitely strongly vehemently deny that we have a role to play, let alone that we are responsible. We don't even say agree that we even have a role to play in this. But by doing that, we're denying our power to change our experience of life. If we take control that I'm responsible, so something is missing from within me. The situation could be horrible, that but why do I need to suffer? I don't need to suffer. I can deal with it to the best of my ability, but why do I need to suffer? Situation जो भी हो, मेरे अंदर इतनी suffering frustration क्यों आ रही है? Let's say people are just not listening. So I can leave the situation. If I cannot leave the situation, I do the best to my ability. Right? जितना भी जो भी मैं कर सकता हूँ in a constructive way. Destruction तो तभी आएगी when I am filled with frustration and venting it out. Right? But if I'm in control of myself, if I'm not suffering, then I'll do the best to my ability and then let it be. Because what else can a person do than do his best or her best? So if I take responsibility, and again, as I said, I can take responsibility only if the self blame is limited or non existent. If self blame is extremely acute, then I'll not be able to take responsibility. And one way to diminish your tendency to get into self blame or self criticism is to stop blaming others or criticizing others. This is what at least I've observed. Basically, it's a muscle that we are building within. कि जब भी कोई गलती करता है, कुछ भी गलती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और जो हमसे रिलेटेड भी नहीं है, पॉलिटिशियंस हो गए या क्रिकेटर्स हो गए या एक्स वाई जी पर्सन हो गया, वी derive a lot of fun out of criticizing or blaming people. But then we don't realize that we are building, strengthening those muscles of blame and criticism within us. Now we don't realize that those muscles are not going to be used only on others. They are going to be used on ourselves also when we do something wrong. So so rather इसलिए we will not accept कि we are doing anything wrong, even though everybody can just see it. It's completely evident that we are doing something wrong, but we'll deny that. Why are we denying that? Simply because it's so painful to accept that. As soon as we accept कि मैंने भी कुछ गलत किया है, इतना अंदर से criticism और blame निकलता है that it becomes difficult to live. So I keep denying कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ हाथ है ही नहीं. But as soon as I say मेरा कुछ हाथ नहीं है, I'm also denying the possibility to change. तो change हो सकता है. This is the fundamental thing. कि ऐसा नहीं that we cannot change, that we cannot build the skills, that we are stuck with where we are. That is not the case. We can build the skills, we can become a different human being, we can change our relationship with ourselves, and we can develop our ability to handle situations without suffering to the best of our ability. I think this is possible, just as it is possible to build reasoning comprehension skills so that options don't seem trapped to you. जैसे एक एवरीडे राइट एक्सपीरियंस होता है, जैसे जो लोग जीमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो व्हेन दे आर टायर्ड दे स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, दे गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग, दे फॉल फॉर अ लॉट ऑफ ट्रैप्स. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑप्शन अब बहुत ज़्यादा ट्रैप्स नज़र आ रहे हैं और दे आर फॉलिंग फॉर ट्रैप्स सिंपली बिकॉज वो ऑप्शन की क्वालिटी नहीं है, वो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी की बात है. क्योंकि अभी यू आर टायर्ड, so you don't have that mental ability, so you find a lot of incorrect options attractive, which you are calling as traps. Similarly, अगर मेरा मूड खराब है, तो I'll have a lot of problems with a lot of things in life which otherwise I would not have if I'm in a good mood. Those, right? This is
दिस समथिंग दैट अ लॉट ऑफ अस कैन रिलेट टू, कि जब मूड अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मूड खराब है तो हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो क्यों है? क्योंकि चीज़ों में की बात नहीं है, हमारा इनर एम्बियंस है। सो वी आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, दिस इज व्हाट वी थिंक कि मैं तो ऑब्जेक्टिवली ही देखता हूँ। दैट इज नॉट द केस। आर इनर एम्बियंस sort of has a defining influence on how we perceive things. तो अगर इनर एम्बियंस ठीक नहीं है तो लाइफ में प्रॉब्लम नज़र आएंगी। अब लाइफ में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इससे कि नहीं नहीं, तुम लाइफ के बाहर की चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, उनको बोलूँ कि तुम ठीक करो। इंस्टेड आई कैन गो विद इन एंड वर्क ऑन माई इनर एम्बियंस, ताकि बाहर की प्रॉब्लम्स मेरे अंदर सफरिंग कॉज ना कर पाए। वो जो भी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी जो रहेंगी, different people will have different motivations, so they'll do different things. So naturally I'll have situations to deal with, but it need not cause suffering if I have the necessary skills or character or inner ambience to deal with them. Thank you.